So good morning, everyone, and welcome to the morning meet. First, we'll start with technical and derivative updates. So what we saw yesterday is basically Nifty did finally give a breakout from this very tight range that it was trading in, that is 15,950 and 15,670. So yesterday it opened above the 16,000 mark and it held this psychological mark on closing basis, wherein it closed at 16,132 with very good gains of over 140 points. So follow-up buying was seen from the previous session, and the weekly derivative XYZ did help index reclaim the 16,100 mark. So basically it closed at almost 22 days 19-day high closing level. And even on the broader markets, the mid cap and the small cap too closed with good gains between 1 to 2%. So it was a broad-based rally, and the metal index saw very good short covering rally, wherein the index closed with gains of 3% and was the best performing sector. Even reality was not far behind; it closed with gains of 2%. Banking, auto, and financials too closed with gains of over a percentage point. So technically, yesterday it has opened with a gap up, and it managed to hold the gap area worth, what do you say, 20-30 points. That is 16011 to 16046. This gap area is open, and it is also a parallel gap. So we can consider this as a bullish island reversal. So till this gap area remains unchallenged, we may see further rally, which can get extended to a 16,200, 400 going forward. So a small resistance point, which is the 50-day exponential moving average for the index, is at 16,149. So if we close above this, then it will give more confidence to the bulls. Even on the bank Nifty front, what we saw is it opened with a gap up, and it opened above the 50-day exponential moving average. So it is a positive sign, and it closed near the day's high point. The rally was mainly fueled by the private majors like HDFC, ICICI, and Kotak, while even the smaller PSU bank names saw very good buying traction, and in Bank of Baroda, Canara Bank, and SBI also posted gains to the tune of 4 to 6%. Going forward, on an immediate front, 35 180 and 35 350. This zone may act as a resistance on an immediate front. So for trading purpose, we need to be careful near these zones going forward. And on the derivative front, what we saw is Nifty futures did saw some short covering to the tune of 6.5%. That is reduction of 0.92 million shares. With that, the total outstanding position stands at 13.35 million shares. Even the PCR OI was flat at 1.26 from its previous close of 1.27, while the option distribution suggests that 15,900 and 16,100 puts saw major additions to the tune of 1.97 and 1.90 million shares. So it is indicating that the base for the Nifty for the coming weekly expiry is shifting higher to 15,900, while the call writers were active at 16,200 and 16,300 strike. So as per the this weekly data, the range would be 15,900 to 16,300. Even on the Bank Nifty futures, OI saw some short covering, wherein the total OI stands at 27.7 lakh shares from its previous of 29.20 lakh shares. And on the institutional equity, institutional flow side, FII did had a net sell figure of 925 crores, while DI had a net buy figure of 980 crores. But on the derivative front, the FII had a very huge net buy figure, wherein the index futures, they are net buy figure of 1263 crores. Index option, they are a net buy figure of 5517 crores. Stock futures, they had a small net buy figure of 132 crores. By stock option, they had a net buy figure of 2 crores. While on the call front, we have given in the technical report, we have given buy on Godrej Properties. We can buy in the range of 1298 to 1308. Stop can be placed at 1276. Target is 1357. While on the derivative report, we have given buy on India Cement. We can buy in futures in the range of 164 to 163. Stop is 160. Target is 170.5. So that would be it from my side. Now I'll pass it over to Archana ma'am for further research updates. Over to you, ma'am.
Thank you, Nikunj. Good morning, team. So, a few updates from my side. On Mahindra & Mahindra, the company has agreed to sell stake in its new electric vehicle arm to British International Investment PLC. So that comes as a positive news on the company's front. On Coforge, the company is in alliance with Newgen Software to help organizations transform current processes, enhance operational efficiency, and gain a competitive edge over peers. Again, a positive news for the company. On Vedanta, the company will acquire Athena Chhattisgarh Power, or 1200 megawatt coal-based power plant for rupees 564 crores. On Power Grid, the CBI has arrested the company's executive director B.H. Jha and 5 others in connection with a bribery case of 93 lakhs, which was recorded from the Jha's resident in Gurgaon. So stock could be showing some negative bias today on this news. On Dr. Reddy's, the US Food and Drug Administration has issued a Form 483 with 2 observations to Dr. Reddy's formulations manufacturing facility in Andhra Pradesh. A negative news for the company. Tata Motors JLR sales fell by 37% YOY to 78,825 units in this quarter ended June 30 due to global chip shortage, COVID lockdowns in China, and new model transition of Range Rover Sport. Star Health, the company's gross direct premium rose 13% YOY to rupees 2,466 crore in the June quarter. On Adani Sports and SEZ, the company has appointed D. Muthukumaran as CFO with effect from July 25. Alchem Laboratories, the company has received Form 483 with 1 observation from the US FDA with respect to ANDA filed for products to be manufactured at its plant in Indore. On Everyday, the board has passed a resolution to formally designate Dabur's Burman family as promoters of the company after the completion of open offer. On Vakrangi, the company reported their quarterly numbers yesterday. The company has clocked a profit of 4.5 crore in quarter ended June 2022, which is down significantly from 23 crore in the corresponding quarter last year, as gross margins impacted primarily due to the launch of additional franchisee incentive schemes. It said that the profit margins have bottomed out and it is confident to deliver improved profitability and sustainable growth in the subsequent quarters. However, revenue from the operation increased sharply to 226 crores in this Q1 FY23 against rupees 154 crores in the same period last year. So operationally a missed quarter because of the higher incentives. However, on the top line front, the company has done pretty well. On Bank of Baroda, the bank said that its investment committee will hold a meeting on July 16 to finalize the quantum and timing of issuance of long-term bonds for financing of infrastructure and affordable housing out of the board approved limit of rupees 5,000 crore. On Kaltur Power Transmission, a subsidiary in Sweden has completed the acquisition of remaining 15% equity stake of a Swedish EPC company by paying $11.5 million US dollar. And LMG also has 2 other subsidiaries. The company has acquired the remaining 15% stake in LMG. So that is again, the positive news on the company's front. And lastly, on the Response Informatics, the company said that the board will hold a meeting on July 14 to consider the proposal of acquisition of Technology Corporation, New Jersey, USA. Hence, the trading window for the dealing in the securities of the company will be closed for all the directors and the allied, the persons of the company. So that's it from my side. Now I hand it over to Prabhakar sir for his research updates. Thank you, and over to you, sir. Thank you, Archana. Good morning, team. Escort Kubota has said that it will increase prices of a tractor effective from 10th July 2022 due to higher commodity prices, which is positive for Escorts and Mahindra. And already, Mahindra, the EV valuation Archana has talked about, that is positive. We are very positive on Mahindra. Yesterday, we gave an update on our conviction buy in auto, where Mahindra and SJS Enterprises are 2 stocks which we like, where major upside is there. But when automobile starts to perform, there are other companies which will also start to perform. For example, Mahindra CIE, Sundaram Fasteners, Bharat Forge, SJS Enterprises, there are other ancillary companies like Minda Industries, which will automatically start to perform. So I think there are some upside possible in these stocks also.
there was a corruption charge, where CBI is raided on Power Grid and Tata Project Executive, and they were held. No, so Tata Power has again clarified that these are not Tata Power Executive, these are Tata Project Executive. So today, Economics Time paper has corrected it. Otherwise, every news item was carrying Tata Power name. So Tata Power yesterday had a AGM where they have committed almost 75,000 crores for the next 5 years. And they have 13,000 crores as a order in solar EPC contract alone. No, previously it was 10,000 crores. Now it is increased by another 3,000 crores, 30% order increase. So Tata Power is one stock. If market starts to perform, Tata Power will be a very good trading bet. Every time you will get 8 to 10%. If market doesn't correct, then banking is one sector which will perform. Already Canara Bank has yesterday gapped up and it was up 6%. Today, if it is slightly negative, it gives an opportunity to buy again. ICICI Bank, Federal Bank, most of the bank, HDFC Bank, everything is looking good. So banking is one sector. As a trader for 15, 20 days or even less than that, you will get a very good opportunity to entry and exit. And in the result update, Archana was mentioning that hotel will report very good results. So I think Indian Hotel is one more stock where trading opportunity will be huge. So there you can trade in and trade out. Indigo has announced that they have hiked the pilot salary by 8%, and they have reinitiated overtime allowance for pilot to pre-COVID level. So this will improve the efficiency of Indigo. Indigo had a strike last Saturday, where many pilots put sick leave. So these things will not recur. And life insurance new business premium, the data has come. The new insurance premium growth is 4%. The problem is 55% of the market share is with LIC. That is degrown by 5%, and that is where now the growth is only 4%. But private insurance has seen 29% growth, and the best among them is SBI Life, which has grown at 60%. And you have HDFC Life growth at 11%. I think for a trader, SBI Life looks good. 8 to 10% return is possible if market is stable. So if market doesn't correct below 15,700, 15,800, I think there is a rally for the next 1-2 weeks. Everything is now stable, but you need to be a trader. Because today also Japanese ex-Prime Minister Abe has been shot. He has been taken to hospital. And blood was bleeding. That is the information we get. Japan, where it was too peaceful, is now having an act of terror. So we need to be careful. These are black swan event which will drag the market down. But for now, at least 1-2 weeks, there will be some upside where you can get some exit or some trading opportunity in the market. Non-insurance companies have also seen 21% growth in June, while June quarter growth was in June 21%. June quarter it is 23%. So ICICI Lombard is one which will benefit, but I don't have the company-wise data here. Health insurance has seen a good demand with 24% growth. We like Star Health at these current levels. BHEL has commissioned 100 megawatt floating solar photovoltaic plant in Telangana for NTPC at Ramagundam. And BHEL has installed almost 147 megawatt in this last 10 months in solar floating projects, which is positive for BHEL. We have never liked this stock, but maybe now as a trader you can look at this stock, but we don't have a major view on BHEL. Ganesh Benzoplast has been allotted 4.5 hectare in Jawaharlal Nehru Port Trust with 25 years lease period from 2022 to 2047. The company said it would build storage tanks for liquid cargo, edible oil, acetone, acetic acid, ammonia, propane, and company said the construction activity will take 2 years to complete. Coal Ministry on 7th July said it would start production of 12 new coal mines by 2022 end. And currently there are
36 captive coal mines, and they will be adding 12 more. HS Kelkar, no, they gave a revenue thing. So revenue was almost 7.5% up at 412 crores on constant currency terms, but in rupee terms it is far higher, and they have reduced debt from 509 crores to 473 crores. And the valuation at current level looks very attractive. So there can be some rally in this stock. No, so one can play that. With that, over to you, Sitija. थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम लोग ये कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं। फर्स्ट अपडेट है महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऊपर। कंपनी अग्री हुई है कि जो उनका स्टेक था न्यू इलेक्ट्रिकल व्हीकल आर्म का वो सेल करने के लिए ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट फ्लैग को। नेक्स्ट अपडेट है कोफोच के ऊपर। कोफोच कंपनी अलायंस करेंगी न्यूजन सॉफ्टवेयर जो कंपनी है उनके साथ। तो उनको जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके जो ट्रांसफॉर्म करंट प्रोसेस है और एनहांस्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसके लिए हेल्प करेगी, और उनके जो कॉम्पिटिटिव एज है उसको पीएस के लिए कंपटीशन के लिए हेल्प करेगी। नेक्स्ट अपडेट है वेदांता के ऊपर। कंपनी ने अक्वायर किया अथना छत्तीसगढ़ पावर कंपनी को, और वो 1200 मेगावाट कोल बेस्ड पावर प्लांट है, और जो एक्विजिशन वैल्यू है वो 564.67 करोड़ है। पावर ग्रिड के ऊपर एक अपडेट आया था कि सीबीआई ने उनके जो कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है बीएस शाह और जो 5 अदर्स कनेक्शन है उस कंपनी के उनको अरेस्ट किया है। जो कनेक्शन था वो ब्राइबरी केस के कारण, और जो 93 लाख है वो रिकवर हुए जहाँ के जो रेसिडेंसी है गुरुग्राम वहां से। तो ये निगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है स्टॉक के ऊपर। आज इसकी रिएक्शन स्टॉक के ऊपर पावर ग्रिड के ऊपर हम लोग देख सकते हैं। डॉक्टर रेड्डी जो कंपनी है उनको यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से एक फॉर्म 483 इशू हुआ है 2 ऑब्जर्वेशन के लिए, जो उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है आंध्र प्रदेश में वहां के लिए। टाटा मोटर्स के जो जीएलआर सेल्स है वो 37% से ईयर ऑन ईयर नीचे आ गए हैं, और अभी 78,825 यूनिट्स ये क्वार्टर तक थे, जून क्वार्टर तक। और ये बेसिकली फॉल जो ग्लोबल चिप का शॉर्टेज है, इवन चाइना में लॉकडाउन था, और जो उनका न्यू मॉडल ट्रांजिशन था रेंज रोवर स्पोर्ट्स का, उसके कारण ये जो सेल्स का फॉल आया हुआ है। नेक्स्ट अपडेट है स्टार हेल्थ के ऊपर। कंपनी का जो ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम है वो राइज हुआ है 13% से ईयर ऑन ईयर, और अभी वो 2,466 करोड़ है जून क्वार्टर में। अदानी पोर्ट है, कंपनी ने डॉक्टर मुथुकरमन को एज ए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अपॉइंट किया है, और ये 25 जुलाई से इफेक्ट होगा। एल्केम लैबोरेटरी है, उनको भी एक ऑब्जर्वेशन के लिए यूएस एफडीए से फॉर्म 483 रिसीव हुआ है, और ये जो उनका जो फैसिलिटी और जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो इंदौर में है, उसके लिए इनको एक ये 483 फॉर्म रिसीव हुआ है। नेक्स्ट अपडेट है एवरेडी के ऊपर। एवरेडी के जो बोर्ड है उन्होंने जो फॉर्मली जो डेजिग्नेटेड डाबर्स के जो बुरमान फैमिली है उनका जो प्रमोटर के लिए इशू था उसको रिजॉल्व किया है, और ये आफ्टर जो उनका ओपन ऑफर था वो कंप्लीट होने के बाद। बैंक ऑफ बड़ौदा है, उन्होंने बोला है कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट कमिटी है उसकी मीटिंग होने वाली है 16 जुलाई को, जो फाइनलाइज करेंगी जो क्वांटम और जो टाइमली इशू जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स रहते हैं और जो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर और अफोर्डेबल हाउसिंग लोन है, उसके कारण जो उनके बोर्ड ने जो आउट ऑफ लिमिट थी 5,000 करोड़ की वो अप्रूव किए थे, उसके कारण उनकी ये मीटिंग होने वाली है 16 जुलाई को। कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन है, उनकी एक सब्सिडरी कंपनी है स्वीडन में, कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन स्वीडन। वो कंपनी ने एक एक्विजिशन है वो कंप्लीट कर लिया है, जो पहले 15% जो इक्विटी स्टेक था एलएमजी कंपनी का, उसका एक्विजिशन कंप्लीट हुआ है, और ये एक्विजिशन 15% कंप्लीट करने के लिए उन्होंने $11.5 मिलियन पे किए हुए हैं, और ये जो एलएमजी कंपनी है उसके और 2 सब्सिडरीज भी है। नेक्स्ट अपडेट है रिस्पॉन्स इन्फॉर्मेटिक्स के ऊपर। कंपनी की जो बोर्ड मीटिंग होने वाली है जुलाई 14 को, वो मीटिंग में वो जो एक्विजिशन है टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन का उसके लिए ये मीटिंग होने वाली है, और ये जो टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन है
ये कंपनी न्यू जर्सी में यूएसए में है और इसके कारण जो ट्रेडिंग विंडो है सिक्योरिटीज की वो क्लोज रहेगी जो डायरेक्टर्स और जो डेजिग्नेटेड पर्सन है उनके लिए। तो ये अपडेट कंपनी ने दिया है। तो नेक्स्ट अपडेट है जो एस्कॉर्ट और कुबोटा जो कंपनी है उनका उन्होंने बताया है कि जो प्राइस ऑफ ट्रैक्टर्स है वो इंक्रीज होगी 10 जुलाई से। तो ये एक पॉजिटिव रहेगा एस्कॉर्ट के लिए। इसके अलावा जो ट्रैक्टर मेकिंग कंपनीज में एमएनएम है इसके लिए भी बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। हम लोगों ने कल आपको एक रिपोर्ट भी भेजा था तो हम लोग काफी पॉजिटिव है एमएनएम महिंद्रा के ऊपर और मिड कैप में एसजेएस के ऊपर। ये दो स्टॉक हम लोग को पसंद है। इसके अलावा जो ऑटो स्टॉक जब चलते हैं ऑटो सेक्टर जब चलता है तो उनकी जो ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स है जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा सीआईई, सुंदरम फास्टनर, मिंडा इंडस्ट्री ये भी परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं और ये स्टॉक्स में भी आप ध्यान रख सकते हो। तो ये स्टॉक्स में भी अपसाइड पॉसिबल है। कल जो अभी मैंने अपडेट दिया कि पावर ग्रिड और टाटा प्रोजेक्ट, तो बहुत सारे न्यूज़पेपर ने बोला था कि जो एग्जीक्यूटिव है वो टाटा पावर के है पर टाटा पावर ने कल उसके लिए एक्सप्लेनेशन दिया जो उनके यस्टरडे कल एजीएम हुई उसमें भी कि जो ये एग्जीक्यूटिव है वो टाटा पावर के नहीं है तो ये टाटा प्रोजेक्ट कंपनी के हैं। तो ये क्लियरिफिकेशन कंपनी से आया हुआ है और उनकी जो कल यस्टरडे एजीएम हुई उसमें उन्होंने बोला है कि वो 75,000 करोड़ नेक्स्ट 5 इयर्स में इम्प्रूव करेंगे मतलब इन्वेस्ट करेंगे। इसके अलावा उनके जो अभी उनके पास 13,000 पहले 10,000 करोड़ की ऑर्डर थी अभी 30% बढ़ के 13,000 करोड़ ऑर्डर उनके पास सोलर प्रोजेक्ट की है। और ये एक अच्छी कंपनी है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी और ट्रेडिंग के हिसाब से हम लोग देखें तो ये गुड ट्रेडिंग बेट हो सकता है और शॉर्ट टर्म में भी। टाटा पावर आप एक ये कंपनी को देख सकते हो। यहाँ से अभी मार्केट करेक्ट नहीं हुआ मतलब एक 15,700 और 15,800 मार्केट ने होल्ड करके रखा। तो बैंकिंग स्टॉक में भी इधर से हम लोग अच्छा खासा रैली देख सकते हैं। तो अब बैंकिंग स्टॉक में कल भी कैनरा बैंक अप ओपन हुआ था और उसके बाद बहुत ही अच्छे 6 to 7% अप हुआ था। आज कैनरा बैंक में कुछ नीचे आता है तो थोड़ा बहुत बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिले तो बाइंग करना चाहिए। इसके अलावा बैंकिंग स्टॉक में आईसीआईसीआई बैंक है, फेडरल बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, ये काफी अच्छे लग रहे हैं। तो 15-20 डेज के लिए ट्रेडर इस पे ध्यान दे सकते हैं, ट्रेड इन और ट्रेड आउट कर सकते हैं। होटल इंडस्ट्री के जो नंबर्स आने वाले हैं ये क्वार्टर के वो काफी अच्छे आने वाले हैं तो अब वो स्टॉक्स के ऊपर भी ध्यान दे सकते हो। होटल इंडस्ट्री में इंडियन होटल काफी अच्छा स्टॉक है ट्रेडिंग के लिए भी और लॉन्ग टर्म हिसाब से भी। इंडिगो ने जो कल इन्फॉर्म किया कि उनकी जो पायलट की सैलरी है वो इंक्रीज करने वाली है बट ओवरऑल देखे जाए तो ये न्यूज के कारण जो उनकी इफिशिएंसी है वो इम्प्रूव होते दिखी जा रही है। और लास्ट सैटरडे भी उनके जो एम्प्लॉयज थे उन्होंने स्ट्राइक किया था और ऑन द स्पॉट एयर इंडिया के इंटरव्यू के जाने के लिए उन्होंने सिक लीव अप्लाई की थी। नेक्स्ट अपडेट है इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर। जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर की इंडस्ट्री है उन्होंने बोला है कि उनकी जो ग्रोथ है वो न्यू बिजनेस प्रीमियम में जून में 4.15% से इंक्रीज हुई है। और ये जो मेनली जो कॉन्ट्रैक्शन है वो जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एलआईसी के प्रीमियम के कारण है। तो ओवरऑल हमें जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में एसबीआई लाइफ है जो 16% से ग्रो हो रहा है और एचडीएफसी लाइफ 11% से ग्रो हो रहा है। तो एसबीआई लाइफ के ऊपर आप ध्यान दे सकते हो। ट्रेडर के लिए 8 to 10% रिटर्न आ सकता है इफ मार्केट स्टेबल रहा। तो मार्केट स्टेबल रहने के लिए 15,700 और 15,800 लेवल होल्ड करने चाहिए और नेक्स्ट 1 to 2 वीक में हम लोग शॉर्ट टर्म रैली यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट है जो नॉन इंश्योरेंस कंपनी है उनमें भी अच्छी खासी ग्रोथ देखी गई। जून में 21% ग्रोथ देखी और जून क्वार्टर में स्पेसिफिकली 23% ग्रोथ देखी गई है। और हेल्थ इंश्योरेंस जो सेक्टर है उसमें जो ग्रोथ है वो काफी अच्छे से बढ़ रही है। तो ये सेक्टर में स्टार हेल्थ एक अच्छा स्टॉक है। जो नेक्स्ट अपडेट है बीएचईएल के ऊपर। जो बीएचईएल कंपनी है उनको इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है उसका कमीशन मिला है और ये 100 मेगावाट जो एनटीपीसी का जो रामगुंडम तेलंगाना में प्लांट है उसका। तो ये प्लांट इंस्टॉल करेंगे नेचुरल रॉ वाटर रिजर्व से और सेविंग जो वैल्यूएबल लैंड रिसोर्सेस है उसके कारण। नेक्स्ट अपडेट है कोल मिनिस्ट्री है उन्होंने बोला है कि 7 जुलाई को कि वो ऑल और 12 जो न्यू कोल माइंस है वो ओपन करने वाले हैं। अभी 36 कैपेसिटिव कोल माइंस है, अभी इसके ऊपर और 12 माइंस वो ऐड करेंगे। So that's it from our end. Thank you everyone for joining the con call. Have a nice day.